Good morning students. Welcome to the VPS online class. Students, yesterday I taught you chapter 3rd, name is keyboard and mouse. Okay, I explained the numbers key. Okay, so students, today I am going to start your next topic, that is some special keys. Special keys means enter key, space bar, shift key. Okay, so these are some special keys. So let us start our today's work. The topic is some special keys. Explain. I will explain. So students, listen very carefully this topic, and if you have any doubts, so ask me in your class group. Okay, so let us start our today's work. Students, yesterday I taught you the number keys of chapter 3rd, name is keyboard and mouse. Okay, so through the keyboard I will show you the numbers key in the keyboard. Okay, I hope you all are well understood. So students, number keys, I again repeat that numbers keys include all the digits from 0 to 9. These keys are 10 in number. These keys are used to enter numbers. There are two sets of number keys on a standard keyboard. Okay, one set is present right above on the top row of the alphabet keys. So students, in laptops, numbers key are present only at one place, that is above the top row of alphabet keys. Okay, so special keys. Now today I will going to start your next topic, that is special keys. So students, what is special keys? Special keys are enter key, space bar key, shift key, control key. Okay, control plus L, CTRL, control in a short way, control key. So enter key. So let us start our first key, that is enter key. Enter key, pressing the enter key moves the cursor to the next line. This key is also used to send instructions and commands to the computer. Got it? Again I repeat, pressing the enter key moves the cursor to the next line. This key is also used to send instructions and commands to the computer. So again I will show you through keyboard that what is enter key. Yes, this is enter key. When you type your lines, then press enter key. So enter key means pressing the enter key moves the cursor to the next line. Okay, आपका next line पे cursor आ जाता है, and this key is also used to send instructions and commands to the computer. Okay, now second key. What is second key? Second key is space bar. Okay, space bar. It is used to give a blank space between letters, words or numbers. It is the longest key on a keyboard. Okay, space bar key, it is used to give a blank space between letters, words or numbers, and it is the longest key on a keyboard. So what is space bar key? Yes. So students, in your keyboard, whose key is the longest key? Yes, this is. So this is the space bar key, which is the longest key in the keyboard. Okay, and this key, when we press this key, so this key is used to give a blank space between letters, words or numbers. Got it? Okay, so एंटर की हो गया, स्पेस बार हो गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट की. ओके,
Shift key plays an important role. So what is shift key? This key always used in combination with other keys. Yes, it appears twice on a keyboard. So the shift key is used to first type alphabet in capital. In caps lock, key is off. Type symbols and punctuation marks printed on the upper side of some keys on a keyboard. Okay, so students, shift key, I already told you that shift key plays a important role in the keyboard, because this key is always used in combination with other keys. So where is the shift key? Yes, shift key is present just एंटर की. ओके, एंटर की के बाद शिफ्ट की आती है. सो इफ वी कैन टाइप द एनी सिंबल्स. ओके, टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल इफ कैप्स लॉक की इज ऑफ, एंड टाइप सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स. सो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये ग्रेटर देन या लेस देन या क्वेश्चन मार्क इस तरह के हमें इसको टाइप करना है, सो वी कैन टाइप द शिफ्ट की के साथ हमें इसको प्रेस करना है. ओके, व्हेन वी प्रेस बोथ कीज, व्हेन वी प्रेस शिफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क बोथ कीज, देन हमारा क्वेश्चन मार्क आपका स्क्रीन पर टाइप हो जाएगा. ओके, या हमें जैसे सिंबल्स हैं, हमारे ब्रैकेट्स हैं, इनको हमने शिफ्ट की के साथ यूज़ किया तो हमारा ब्रैकेट्स यूज़ होगा, और अगर हमने इसको सिंगल प्रेस किया तो हमारा ज़ीरो टाइप होगा. ओके, सो इसको आप लोग ज़रूर इसको प्रैक्टिकली इफ़ यू हैव कीबोर्ड, ओके, सो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, नाउ शिफ्ट की. सेकेंड, टाइप अल्फ़ाबेट इन कैपिटल इफ़ कैप्स लॉक की इज़ ऑफ. अगर कैप्स लॉक की आपकी ऑफ होती है तो आप इसको शिफ्ट की के साथ में आप कोई भी लेटर कैपिटल लिख सकते हैं. ओके, जैसे सिंगल आपने एल दबाया तो आपका स्मॉल आएगा, बट शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस किया तो कैपिटल आ जाएगा. ओके, इफ़ योर कैप्स लॉक, दिस इज़ योर कैप्स लॉक. कैप्स लॉक आपको अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आप इसको कैप्स लॉक की को ऑन कर देंगे तो आपका वर्ड आपका कैपिटल में आएगा. अगर ऑफ कर देंगे तो आपका स्मॉल लेटर्स में आएगा. सो स्टूडेंट्स, ट्राई दीज कीज़, enter key, space bar and shift key. Try these key in your, if you have any keyboard, so try it. Okay, and if you have any doubt students, so ask me in your class group.